Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar and I'm bringing to you one of the most awaited session called Throwback 2019. What is this Throwback 2019? Throwback 2019 is a complete revision of current affair from January 2019 till December 2019. We have divided the entire current affair into certain topics. Okay, here we are going to cover bill, law, constitution, justice. Okay, this aspect will be covered in couple of modules. Okay, similarly, we'll have person in the news, we'll have places in the news, we'll have defense exercises, we'll have ranking and indices, and so many things. So we are going to cover everything which is needed for you in your examination to remember. This is what we are bringing to you. You may wonder, sir, do we need to remember this January related thing? Some of the examinations which will be coming in the month of January, February, you may require to remember. But some of the examinations which are going to come in the month of May, जो भी एग्जामिनेशन मई के महीने में आने वाली है, अप्रैल के महीने में आने वाली है, शायद आपको इनमें से सब कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर आप ये पढ़ेंगे, if you try to read this, if you try to understand it, it will develop your concepts and therefore जो भी जनवरी, फरवरी, अप्रैल के महीने में जो भी नए नए बदलाव आएंगे उसके कंटेक्स्ट को आप समझ पाएंगे. आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रेगुलरली करंट अफेयर को फॉलो करते हैं उनको आज हम जो भी बात करने वाले हैं सब पता रहेंगी, ठीक है. पर उसके अलावा it is very important for the students who are watching it for the first time on this ProTalent. It is very important for you to go through this Throwback 2019. Okay, I am going to cover entire aspect of Throwback, that is 2019, in some around you can say 12 to 15 modules. Okay, and this is our first module. And let me give you assurance that I am going to cover everything in great detail. Do not miss out this. Okay, and this entire thing will be available to you on protalentdigital.com. protalentdigital.com के ऊपर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी जहां से आप इसको फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं और 10 बार रिवाइज कर सकते हैं. आई होप इट इज वेरी गुड फॉर यू. यस, वंडरफुल. लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस Throwback 2019 session number 1 and I'm starting with bills, laws, constitution and justice issues. सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था 2019 का is this. Okay, government scrapping special status for Jammu and Kashmir. How was this special status provided? It was through Article 370 of Indian Constitution. Article number 370 has been, you can say, defanged. उसको निकाल दिया गया, ठीक है. और उसके द्वारा there are 2 union territories were developed. Which were those 2 union territories? Number 1, it was, you can say, Jammu Kashmir, and second was Ladakh. ठीक है. The resolution was adopted by Lok Sabha with 351 members. Students who are going for AILT examination, please remember this number. 351 members voting in support, 72 against it, and 1 member abstained it. The bill is going to create 2 union territories, 1 union territory, that is Jammu Kashmir, with legislative power. Okay, so in India now total 9 union territories are there. In 9 union territories, 3 has legislative power: Delhi, Jammu Kashmir, and now this Jammu and Kashmir. Okay, and Pondicherry, sorry. Ladakh is a normal union territory. ठीक है. The bill to create union territory Jammu Kashmir and Ladakh was passed by Lok Sabha with 370 votes in favor while 70 against it. And this resolution was approved by Rajya Sabha on August 5, 2019. आपको बताना है, देखिए दोस्तों, जब मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी देता जाऊंगा. आपको बताना है that on which date this union territory came into existence. This is the question you have to answer. Okay, so this is number 1. Number 2, President Ramnath Kovind accords assent to the bill to appoint more Supreme Court judges. Now you can say we have, you can say, bigger strength in Supreme Court. Earlier it was 30 plus 1 Chief Justice of India.
Now this is old. Okay, now the new one is 33 plus 1 Chief Justice of India. So that means total 34 judges are there in our Supreme Court. This is an approved, you can say, strength of Supreme Court. Now it is 34. 33 plus 1 इसी तरीके से बोला जाता है, ध्यान रखिएगा ये. ओके, ठीक है. दिस इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गिव अप्रूवल टू दिस. Parliament approves a bill to scrap 58 archaic laws. Archaic, पुराने जमाने के, ठीक है, obsolete, जो आज उसका कोई महत्व नहीं है. They have become redundant, ठीक है. There are some laws which have become obsolete in today's time. For example, if you talk about laws related to, let's say, riding, you can say horse or riding a bullock cart, है ना, आज के ज़माने में वो redundant हो चुके हैं. Total 58 old central laws were made redundant. AILT में ऐसे सवाल पक्का आते हैं, ठीक है. History made where triple talaq bill was passed by the parliament, and this is known as Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2019. It is also known as triple talaq bill. It was passed in July 30, 2019 और लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर भी ये पास हो गया. I don't think that you may possibly have to remember the numbers here in terms of 303 versus 82. ये जरूरत नहीं पड़ेगी इधर. But ट्रिपल तलाक बिल, that means कोई भी हस्बैंड रिटर्न या ओरल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 3 बार ट्रिपल तलाक बोलेगा, दैट इज तलाक बोलेगा, तो वो तलाक नहीं माना जाएगा. ऑल द मोर it is made illegal and it is made a criminal offense. ठीक है. डिबेट वहीं पे थी, किसको क्रिमिनल ऑफेंस और पेनल्टी क्यों लगाया गया. इलीगल बोल दिया, उतना ही काफी था, बट फिर भी यहां पे इन्होंने बोल दिया इट इज अट्रैक्टिंग द पनिशमेंट अप टू 3 years of imprisonment including fine. This is cognizable offense. Okay, so it is a cognizable offense. You have to tell me what is cognizable offense. Okay, ठीक है. यहाँ पे मैंने already we can say कुछ information देके रखी है. Please आप बताइए what is cognizable offense and what is not cognizable offense. Okay, ठीक है. This is primarily a married woman, ठीक है, or any person who is related to that lady by blood, ठीक है, will be in a position to, you can say, go for this kind of case against the husband. ठीक है. Owner must act within 12 years or squatter will acquire rights. This is what Supreme Court provided. ठीक है. If a rightful owner of an immovable property fails to take action to get back the possession within a limitation period. Now what is a limitation period? For example, let us say you have your property, you have given this property to someone on a you can say tenant basis, और वो बंदा वहां से खाली नहीं कर रहा है, ठीक है, and you are not taking actions for 12 years, ठीक है, आपने कोई 12 साल तक कोई एक्शन लिया नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट या लॉ के मुताबिक ऐसा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी अब उस बंदे की हो गई. ठीक है. This is what Supreme Court gave a judgment on. This is very important. However, the top court held that no benefit of adverse possession should be given to the people who encroached upon the public land. This is called adverse possession. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग योर प्रॉपर्टी, मैं आपकी प्रॉपर्टी ले रहा हूं, ठीक है ना, मैंने टेनेंट के बेसिस पे लिया था, अब मैं वहां से हट नहीं रहा हूं. सो दिस इज कॉल्ड एडवर्स पोजेशन. ये एडवर्स पोजेशन का बेनिफिट पब्लिक लैंड के लिए नहीं मिल सकता. ठीक है ना. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. ठीक है. प्राइवेट के लिए 12 साल का टाइम है, दैट्स कॉल्ड अ लिमिटेशन पीरियड. उसके अंदर अगर कि ओनर ने एक्ट किया, कंप्लेन किया, केस निकाला, तो बात बराबर है. ठीक है. नहीं तो स्क्वाटर विल एक्वायर द राइट. ठीक है. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वाटर. ओके. नेक्स्ट, रिजर्व्ड कैंडिडेट्स कैन नॉट माइग्रेट टू अ जनरल सीट. This is what Supreme Court gave a judgment in July 4, 2019. This is very interesting. A reserved category candidate who has availed age relaxation in the selection process cannot seek accommodation in or migration to a general category seat at any later stage. I'm sure you know Article number 16 of Constitution empowers state to give reservation or give, you can say, reservation in the appointment to any backward class of citizens including SCs, STs and OBCs primarily in the public employment. Okay. State shall not discriminate, that is article number 15 or 16 के मुताबिक discrimination in the employment
should not take place. The court's verdict came in a play by a candidate named Nirav Kumar Dilip Bhai Makwana, who challenged the High Court order by which it had upheld the GPSC Gujarat Public Service Commission's selection process. और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे दिया that a reserved candidate getting admission, getting job in the reserved category cannot later on claim under the, you can say, normal category. Customary divorce from wife is a no license to remarry. Supreme Court in March 7, 2019 said a marrying second time on the basis of customary divorce. You may ask, sir, what is customary divorce? Customary divorce is a recognized method of separation without involving court. कोर्ट में नहीं जाना है, ठीक है. हस्बैंड और वाइफ दोनों बोलते हैं कि भाई वी आर नॉट नाउ मैरिड, ठीक है, हम दो अलग अलग रहना चाहते हैं. दैट्स कॉल्ड कस्टमरी डाइवोर्स. बट कस्टमरी डाइवोर्स के बेसिस के ऊपर आप रीमैरी नहीं कर सकते, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट वाइफ विल रेंडर द सेकेंड मैरिज वॉइड एज द लॉ स्टिप्युलेट्स द मैन एंड वुमन आर परमिटेड टू टाई न्यूपिटल नोट ओनली इफ दे डू नॉट हैव अ लिविंग स्पाउस. ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये महत्वपूर्ण मुद्दा है दैट इफ दे हैव अ लिविंग स्पाउस दे कैन नॉट रीमैरी. नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स कोड ऑन वेजेस बिल. जुलाई 3rd, 2019 approved code of wages bill which seeks to subsume existing laws related to workers remuneration, enable the center to fix minimum wages for the entire country. ठीक है, this is act to amend and consolidate various laws related to wages and bonus and matters related to, you can say, this wages related aspect. It will be the first code to become an act out of the 4 codes. कौन से 4 कोड इसमें सब्ज्यूम हो जाएंगे, ये सवाल एग्जाम में आएगा. ठीक है, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ and occupational safety health and working conditions, ठीक है, which is under Ministry of Labor and Employment. Okay, ध्यान रखिएगा इस बात को. Bill banning commercial surrogacy has been approved. Now in India, commercial surrogacy has been banned. Altruistic surrogacy is acceptable. Commercial surrogacy has been banned. Okay, this is very important. What is commercial surrogacy? You may ask possibly what is surrogacy. Surrogacy is basically अगर कोई एक couple कोई particular कारण की वजह से if they are infertile and they are not able to conceive a baby, then they can, you can say, take another woman's womb on a rent. उनका egg उस वुमन के वुम्ब में जाएगा और वहाँ से वो बच्चा डेवलप होगा और बाद में वो बच्चा डिलीवर करके उन कपल को दे देंगे. नाउ दैट वुमन विल नॉट हैव एनी राइट ऑन दैट बेबी व्हाइल द कपल विल टेक अवे दैट बेबी एंड दैट्स इट. ठीक है, दिस इज हाउ द रिलेशन एंड्स. ठीक है, पहले वो कॉमर्शियली अलाउड था भारत में एंड भारत वाज नोन एज अ कॉमर्शियल हब ऑफ द सरोगेसी. अब उसको हमने बैन कर दिया फॉर ऑब्वियसली द गुड रीजंस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर, यू कैन से, रेंटिंग देयर वूम एंड डॉक्टर्स एंड द रिच पीपल वर एक्सप्लॉइटिंग देम. Now, surrogacy regulation bill 2019 proposes to regulate this entire activity of surrogacy in India by establishing National Surrogacy Board and State Surrogacy Board at appropriate level. This is what they have done. ठीक है, Parliament passes NIA Amendment Bill 2019. This is called National Investigation Agency. This is very important. Okay, this is enhancing the jurisdiction of NIA to investigate scheduled offences committed outside India targeting Indians as well as Indian assets abroad. Very important है ना, ध्यान से देखिएगा क्या किया. This is a latest amendment. It will enable NIA to additional investigate offences related to human trafficking, counterfeit currency, manufacture or sale of prohibited arms, cyber terrorism, offences under explosive substance act 1908. ये सब NIA में इंक्लूड किया गया है. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. आपको बताना है, होमवर्क सवाल आपके लिए, दैट हु इज अवर, यू कैन से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. ओके, बताइए नाम. हिस्टोरिक मेजर, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स 10% कोटा फॉर पुअर
among the general category. तो जनरल कैटेगरी में भी जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होंगे उनके लिए 10% कोटा विच इज नोन एज EWS. दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन. आपको पता होगा in India we have a reservation for SCs, STs and OBCs which is caste based and thereby it is religion based, while the physically handicapped people have a reservation which is not religion based, and similarly this 10% quota is not a religion based, it is 10% for economically weaker sections. The quota will include all sections which is outside the caste, okay, so including Christians and Muslims and everything, okay. So this was 124th Constitution Amendment Bill, and when it was passed it became 103rd Constitutional Amendment Act. Okay, so it has become 103rd. So you may ask, sir, वो 124 और ये 103 क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है ना. आप देखेंगे अमेंडमेंट का एक बिल होता है, उसकी एक लाइन होती है ना, उसमें नंबर दिया जाता है, ठीक है. तो वो बिल होता है तब उसके नंबर होते हैं. जब बिल पास हो गया, ठीक है, तो एक्ट बन गया. तो जब एक्ट हुआ तो कौन सा एक्ट कौन से नंबर का होगा उसका अलग नंबर बनेगा. सो दिस इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड बिल था 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ओके, चलिए ग्रेट. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम कवरिंग ओनली दिस पार्ट. ठीक है, आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू. आपको काफी अच्छा लग रहा होगा. ठीक है, आई विल बी कवरिंग ऑल एंटायर एस्पेक्ट ऑफ थ्रोबैक 2019 फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है, यू कैन लेट मी नो कि आपको कैसा लगा. ठीक है, आपको ये पसंद आया. ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. यू कैन वेरी वेल सेंड एन ईमेल टू मी ऑन protalentdigital@gmail.com. आप वहां पे मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा. ठीक है, यू मे पॉसिबली गिव फीडबैक ऑन अवर गूगल पेज एज वेल. ProTalent करके आप गूगल पे सर्च करिए. वहां पे जो भी गूगल का पेज ProTalent का दिखेगा वहां पे आप वहां रिव्यू बटन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, सो दैट वी गेट टू अंडरस्टैंड दैट आपको ये मॉड्यूल कैसा लग रहा है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डू नॉट मिस आउट टू कवर द एंटायर मॉड्यूल. थैंक यू.